Hi, welcome on board. I am Atik Balai and I am going to talk about Introduction to International Relations. A lot of people think international relations is like a game of chess, where people sit quietly, thinking out their strategy, taking their time between moves. But it's not a game of chess, it's more like billiards, where there are a bunch of balls in the middle of the table and somebody comes with a cue stick with the hope of getting a ball into one of the pockets on the sides. And on the way, it hits a lot of other balls. International relations bears more than a slight resemblance to the mafia. Year 1919, University College of Wales, Aberystwyth, United Kingdom. A chair was established, Woodrow Wilson Chair of International Relations. World War has wreaked a havoc. Europe is wounded and so is the whole of humanity. अब होता ये है कि यूरोपियन कॉलोनिस्ट्स ने जो दुनिया के साथ किया था वो उनके साथ हो रहा है. Because war did not determine who is right, who is wrong. War only determined who is left. जंगें कभी तय नहीं करती कि कौन गलत था कौन सही. जंगें ये बताती हैं कि क्या बचा. Questions were asked. Why the Great War happened? What can we do to stop another such war? How can continents be prevented of killing and destruction? Intellectuals of history and politics started studying the system. They asked, what was the system that started the Great War? And what new system or characteristic changing even in the old system will change us and we will not have a second world war? The war was banned in 1926. But do you think if the war was banned, we had another world war? In a 45 years long Cold War, there are still wars going on. Questions such as these and others are the subject matter of international relations, like which domain does international politics come in? What is the difference between international governmental organizations and multinational corporations? What is institutionalism and where United Nations lie in theoretical terms? Events and trends occurring at international come global level affect us as individuals. Do we as individuals affect international events? Global pandemic has brought us to a new normal. So, what does international system has done to stop it? Colonialism, this nasty word. Colonialism has ruined continents and are we able to come out of post-colonial effects, or are we still exploited by new imperialism? Questions such as these and others are the subject matter of international relations, as I have told you, and we analyze these all while having an interdisciplinary approach, consulting the theories of political sciences, cultural anthropology, world history, psychology, language and political economy. हम देखते हैं कि 1919 में इंटरनेशनल रिलेशंस सब्जेक्ट की बुनियाद रखी गई. तो क्या जो दुनिया उससे पहले थी उस दुनिया को बदल सके? नहीं. लेकिन जैसे जॉर्ज सैंतायाना ने कहा था कि इफ़ यू डू नॉट रिमेंबर द हिस्ट्री यू आर कंडेम्ड टू रिपीट इट. तो क्या हमने तारीख से सीखा या हमने वही गलतियां दोहराई? 1926 वॉर इज बैंड. 1929 and 30 the Great Depression comes. But in 1939 we have another world war. 1945 we establish United Nations Organization. But the same year Cold War starts. 1948 Universal Declaration of Human Rights. But the same 1948 is the start of the conflict of Kashmir and the conflict of Palestine. There were wars, the Korean War, the Vietnam War, the Afghanistan War, the Iraq and Kuwait War, the Iraq and Iran War, Indian and Pakistani wars. The world does not stop with the wars.
Let's just go back for a while. 1964, globalization, the birth of globalization. 1989, fall of Berlin and the end of the divide between the East and the West Germany. But then comes the 9/11, terrorism starts. We have seen the recession of 1907 or 1909. We have seen other crises in the near times. Islamophobia, global warming, the change of world orders, Chinese imperialism, question mark, United States imperialism, question mark, the bigger powers exploiting the smaller powers, question mark, the global poverty, question mark. But then we come with millennial development goals and sustainable development goals. So there is this conflict of the good humans and sometimes the humans trying to do bad things that affect the good humans. एक फ़र्ज के तौर पे जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस को समझना चाहते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो फिर आपको थ्योरी चाहिए होती हैं, आपको थोड़ी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, आपको कुछ दूसरे सब्जेक्ट से कंसल्ट करना पड़ता है, लेकिन आपको सवालों के जवाब ढूंढने ही पड़ते हैं, क्योंकि जब तक ये दुनिया समझ नहीं आती तो फिर आप अपने जहन में तख्लीक करदा दुनिया की जो एक अधूरी तस्वीर होती है उसको पेंट नहीं कर सकते, उसकी ड्राइंग बंद कर देते हैं. तो जो हम चाहते हैं वो ये है कि हम दुनिया की उस पिक्चर की ड्राइंग एंड पेंटिंग जारी रखें, आगे चलते रहें. हमने एक सफ़र शुरू किया है, हम चाहते हैं इस सफ़र में आप हमारा साथ दें, बिकॉज और दिस जर्नी डिपेंड्स ऑन यू. दुनिया बहुत बार वो चीज़ें महसूस कर चुकी है जो पाकिस्तान इंडिया की पहली जंग के दौरान साहिल लुधियानवी ने महसूस की थी. बरतरी के सबूत की खातिर खून बहाना ही क्या ज़रूरी है, घर की तारीकियां मिटाने को घर जलाना ही क्या ज़रूरी है. जंग वहशत से, बर्बरियत से, जंग मर्ग आफरी सियासत से, अमन इंसान की बका के लिए, जंग इफलास और ग़ुलामी से, अमन बेहतर निज़ाम की खातिर, जंग सरमाए के तसल्लुत से, अमन जमहूर की खुशी के लिए, जंग जंगों के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़, जंग जंगों के फ़लसफ़े के ख़िलाफ़, अमन पुरअमन ज़िंदगी के लिए. और मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे अमन और इंसानियत की भीख दो. 1919 जब आईआर को एज ए सब्जेक्ट फॉर्मली इस्टेब्लिश किया गया, तब से लेकर आज तक आईआर की बहुत सारी थ्योरीज डेवलप हुई, हिस्ट्री को एनालाइज किया गया, पॉलिटिकल फिलोसफी पे काम हुआ, सोशल साइकोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई. ये एक पूरा लंबा प्रोसेस है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट्स को, क्राइसिस को, वॉर्स को, ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे इश्यूज़ को और इस तरह की बहुत सारी ग्लोबलाइजेशन और बहुत सारे ट्रेंड्स एंड इवेंट्स हैं इस पूरे प्रोसेस में जिनको डिटेल से एनालाइज किया गया है. उन सब की डिटेल्ड वीडियोस आने वाले दिनों में हम आपके साथ शेयर करेंगे. हमारे फेसबुक पेज और हमारे वेबसाइट के लिंक्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं और हमने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स मेंशन कर दिए हैं. इस इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हमारे साथ फेसबुक पेज और वेबसाइट के थ्रू कनेक्टेड रहिए. एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट and do subscribe our channel.